पिछली बार भी बड़ा हौसला अफजाई हमारी की थी। लास्ट में बोलना है तो योगेश जी कह रहे लास्ट में बोलेंगे। चलो जी लास्ट में बोलेंगे, कोई बात नहीं। सर मुद्दा पता की है, असी ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ MSME ਜੋ ਪੇਂਟ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਾਈ ਰੀਚ ਹੋ ਜਾਏ, ज़्यादा तो ज़्यादा लोग एक दूजे को जान लैन, पहचान लैन, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल सप्लायर्स, ज़्यादा से ज़्यादा रीच स्मॉल स्केल दी ऑल ओवर इंडिया तक हो जाए। दिस इज़ द रीज़न वाई दिस कॉन्फ्रेंसिस वी आर डूइंग। फिर ਜਿਹੜੇ रॉ मटेरियल सप्लायर्स रीजनल होंगे ने उन्होंने बड़ा बेनिफिट होता है। अंडर वन रूफ बहुत सारे मैनुफैक्चरर्स वन टाइम ही उन्होंने मिल जाते हैं, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि पंजाब बहुत वड्डा है सर, पंजाब सूबा बहुत वड्डा है। उस जगह ते एक बंदे को पहुँचना टाइम कंज्यूमिंग है, मॉनिटरी बहुत लगते हैं, पैसे बहुत लगते हैं। तो साडी कोशिश है कि एक जगह तो सारे मैनुफैक्चरर्स इकट्ठे हो जान और सबनों एक दूजे नाल मुलाकात हो जाए, और पंजाब के जिहड़े रॉ मटेरियल सप्लायर्स या होर रॉ मटेरियल सप्लायर जिहड़े ने उन्होंने भी एक मार्केट मिल जाए और उन्होंने ऑप्शन मिल जाए। सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि असी पेंट विजन MSME जो ज्वाइन कर रही है वो लोग बहुत एप्रीशिएट कर रहे हैं, और वो वास्ते तुहाडा बहुत बहुत थैंक्स है क्योंकि तुसी इन्ना प्यार दे रहे हो। मैं जिथे जिथे गया पिछले असी लगभग 2.5-3 महीने तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और 2.5-3 महीने तो मेहनत करने का नतीजा है कि अज तुसी साडे नाल सारे जुड़े हुए हो। एक मैनुफैक्चरर्स जितों तक असी पहुँच पाए, जिन्ना तक नहीं पहुँच पाए, कई हैगे ने जिहड़े सानू बोलते रहे कि भाई आओ, बट वी कांट रीच देम एट दैट टाइम। बट जिन्ना कोल असी गए दे लव्ड अस अ लॉट। उन्होंने जो प्यार दिता, जो ब्लैसिंग्स दित्तियां, वो रीज़न है जी सर इत्थे असी दूसरे साल अज यह प्रोग्राम कर पा रहे हैं। और दिस इज़ बिकॉज यू, आप तुसी लोग जिहड़े प्रोग्राम जिहड़ा ऑर्गेनाइज करते पे हो, असी तो सिर्फ एक जरिया गए हाँ। जे तुसी लोग नहीं होवोगे तो यह प्रोग्राम भी नहीं हो पाएगा। तो यह बहुत बड़ा थैंक्स तुहानू मैं देना चाहना वा, और मैं वेलकम करना चाहना वा सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ आए अपना टाइम ਕੱਢ के। मैं एक एश्योरेंस जरूर देंगा कि अज का जोड़ा पूरा दिन है तुहाडा बहुत एजुकेशन लैन वाला जाने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है। ये बहुत सारी चीज़ां तुहानू नवीं मिलणगियां, बहुत सारी चीज़ां जिहड़ियां तुहानू नवीं पता लगणगियां। असी स्पैशली डॉक्टर अनिल बंसल जी को बुलाया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि लो कॉस्ट हाई शीन इमल्शन एक किस तरह बन सकता है, किहड़े मिनरल्स यूज़ कर सकते हैं, वो बारे भी दसो। डॉक्टर साहब सो काइंड कि उन्होंने एक्सैप्ट किया। इस तो बाद एक असी रिक्वेस्ट किया डॉक्टर गौरव को कि पाउडर कोटिंग के उत्ते भी कुछ हो सानू दसन, क्योंकि पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री इज़ राइजिंग लाइक एनीथिंग, और उसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। तो असी यह भी सोचा कि पाउडर कोटिंग के बारे भी थोड़ा बहुत जानकारी साडी पेंट इंडस्ट्री के पंजाब सूबे के लोगों को होनी चाहिए। वी रिक्वेस्टेड डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव, तो वह अज एक पाउडर कोटिंग के उत्ते बड़ा जबरदस्त एजुकेशनल सैशन लैके आ रहे हैं। फिर असी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि PU 1 कंपोनेंट 2 कंपोनेंट के उत्ते भी तुसीं थोड़ा जिहा साडे नाल सानू थोड़ी नॉलेज दिओ, तो वह भी अज होएगा इत्थे। AI की इंपॉर्टेंस की है, AI आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की इंपॉर्टेंस अज की डेट अंदर पेंट इंडस्ट्री की है, वो बारे भी सारी चीज़ां तुहानू इत्थे पता लगन की असी कोशिश की कि तुहानू पता लगे। आजकल पिगमेंट डिस्पर्जन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है। स्वर रवेशिया वो तुहानू दसणगे कि पेस्ट का किवें तुसीं यूज़ कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो, और प्रोडक्शन नू तुसीं वधा सकते हो। तो वो बारे अज गल होएगी इत्थे। इहदे इलावा मनीष वत्स टोयान इंडस्ट्रीज तो साडे नाल जुड़े ने अज, जो सानू दसणगे कि मशीनरी केड़ी और किस तरह इस्तेमाल की जा सकती है, उसकी मेनटेनेंस किवें की जा सकती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ां तुहानू मशीनरी बारे अज पता लगणगियां। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अज तुहानू एक ब्लैसिंग्स मिलण वालियां ने और एक तजुर्बे की गल्लां भी होने वालियां ने, जो साडे नाल GB सिंह सर दसणगे सानू, क्योंकि यह बहुत वड्डी प्रॉब्लम चलती पई है कि वड्डी लार्ज स्केल कंपनीज आर कॉम्पीटिंग विच ईच अदर, उहदा सानू बहुत नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने किस तरह असी मैनेज कर सकते हैं, सजैशनस ने, और वो GB सिंह सर सानू अज उहदे बारे दसणगे। इस तरह का पूरा एक अज तुहानू बहुत अच्छा दिन निकलने वाला है।
ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਟਾਈਡੈਕਸ ਕੋਟਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰੇਂਦਰ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾ ਫਿਕਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜੋ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਗਰੈਸਿਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਜੋ ਟੋਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ MSME ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭੇਜੋ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਟੂਡੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਵਰਸ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੋਂਸਰ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਰ 2-4 ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਆਹੋ ਯਾਰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਪੇਂਟ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੋਰ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਫॉर दैट I want to invite Kanish Malhotra. She would like to show you something, what Paint Vision is doing, what are our future plans, और ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। I would like to invite Kanish Malhotra. Please come on the stage. Right. So now Paint Vision has been working for last 6 years, and we've seen a drastic shift in the market, in the system of paints and coatings industry, not just in terms of business, but in terms of ways of doing business. Today, I'm going to be sharing with you a very important topic and a concern from a lot of people. I would like everyone's attention on the stage, because this is something really important, and we are offering something very important to you for your growth, for your business. I hope this will come handy and this will come in your use. So today we are talking about future. It is about getting ready for the future. Paint Vision has always worked for you, for your growth, for betterment of paints and coatings industry. And again, we are here with something that you all require, you must be looking for it, and that is marketing and branding. Marketing and branding is not just limited to events for us. Now we are talking about the growth that feels difficult, but now it won't be anymore. Because Paint Vision is stepping into digital world of marketing to help you not just generate leads, but convert them into lasting business growth. With industry-focused strategies, AI-driven tools, and integrated platforms.
We bridge the gap between traditional branding and modern digital reach, ensuring your products gain visibility, credibility, and stronger market presence. Up until now, we all were using our normal basic ways, sending our salespersons to the market, asking them to work more for your business, or telling them the product list, then giving them price list. But this all can be very easy, cost reducing for everyone in terms of marketing. How is that possible? I'll be telling you in future slides. Now the question is, there are plenty of marketing firms that can help you. Why you should choose Paint Vision? Paint Vision is India's fastest growing platform when it comes to Indian paints and coatings industries. We have ensured trusted industry credibility, high quality B2B visibility, effective lead generation, and now we are also going forward with new ways, that is digital promotions and AI integrated digital promotions. Paint Vision has always been focused on paints and coating industry, but now there's a broader way. We all know that we are working in one industry, but we can serve and cater to different industries as well. What is something we don't know yet about the industry and which can help us scale our sales? What if I tell you that I have a solution to your sales and branding needs which will help you grow your market for raw material suppliers? Now you will be able to reach all these following industries: adhesives and sealants, construction chemicals, printing inks, plastic and polymers and plastic master batches, textile coatings, automotive OEMs, wood coating and furniture. I am taking all the names of the industries where you must be sending your all raw material products. Am I right here? Are we all keen to send our products to all these industries? I did not hear anyone here. Anyone who's from raw material manufacturing or is a supplier, are we sending these products, our products, to these industries or not? Or do we wish to send them? I don't know if everyone is listening, but yes. Yes, thank you for the hand. So these are the industries we will and we can cater without even sending our salespeople to them, without even going forward with a lot of preparation. Just keep a foot in your office, and this all can be done through our digital promotions. You can reach and expand your business, and it was never this easy. For all the paint manufacturers, these are the places where you can easily promote or brand or market your products. The industries like people like architectures, then interior designers, even institutions and hospitals, institutes, export buyers. These are the places where you can reach very easily and expand your brand. The package, the integrated overview, what we are offering here is this. Starting from a newspaper that we are well aware of, Industrial Front Paint Vision, through which you can easily reach to distributed and targeted stakeholders of the industry. Then there is our website. We have two websites. One is Industrial Front and another one is Paint Vision, where we have more than 10,000 readers per month. So it becomes very easy, and mind it, we all have it from these industries. All these members from these industries are reading us on our portals, on our in our newspaper, because we are not just now going for paints and coatings, but we have all these industries who are reading us. Then we all know about WhatsApp community. We have our distinguished 12 to 15 groups of Paint Vision. So that can be, again integrated into the integrated package, where the product offers, the updates, announcements, you can all put it there, and you'll easily reach more than 10,000 people across India from all those different industries. Then comes a podcast. We have already done a lot of interviews of different people,
and you can definitely book it with us, and we will be shooting a video, a podcast with you about your brand, and that can be easily promoted. Web and social media handling. We are well aware that all this, if we are doing our business offline, we have to show it out online. So keeping your website well structured, scaling your social media by putting posts, and email marketing is very important, which will be handled by us, by Paint Vision, so that you don't have to worry about adding it into different, getting a new marketing firm or getting more people for you. This all can be handled by our organization. Then obviously, then comes AI and technology. I know we will be talking about this in our further sessions as well, but it is very important to integrate AI into your systems, not just human possibilities, but AI can grow, can scale your business so much more that it is beyond our imagination. We can have AI chatbots that can help your company get the leads, error-free leads. It can be automated. Then a voice agent that can hear calls on your behalf. We can introduce your price list to them, and whoever calls on that number, AI will be responding to them in your own voice. It will be you, but your artificial version. Then also we have AI sales that can get you leads, that can get you wider audience from all those industries. This is how we will be reaching all those industries, all the businesses, and promote our businesses there. We have website services also. That is differently, obviously we can talk about that later. I'll be here. If anybody wants to know more about what we are going to do, you can definitely talk with us, and we can plan a whole procedure for your brand. Again, the AI thing. And now, if you're ready to take the leap, you can definitely reach out to me, or text us, or WhatsApp us, go to our website, reach to our customer support, everything. Apart from this, the announcement from Paint Vision is that today, as we gather regional summit for paints and coatings industry, we are excited to share that with all of you that for years, Paint Vision has been known for its annual business summits and awards and conclaves, a platform where industries come together to shape the future. But this year, we are taking a further step. We are officially launching the Paint Vision Regional Connect series, a state-wise roadshow of summits and workshops across India. This is a simple idea. Instead of waiting for one big annual event, we bring knowledge, networking, opportunities directly to different states, focusing on the local challenges, strengths, and growth stories of each region. Punjab is just the first stop from us. From here, we will be traveling across India, state by state, city by city, creating a stronger, more connected paint and coating ecosystem. This is not just another summit. This is the start of a journey to empower every corner of Indian paint industry. Soon, we will be announcing the dates for our upcoming UP and South India summits. Thank you so much for being here with us. I hope it was information for you. And whosoever wants to scale their businesses and think that this is something you are lacking in digital or future tech AI prospects, we are here. You can connect with us anytime. Thank you so much. I hope you enjoy the day. Thanks a lot. And